हम सीधा हम प्रोग्राम काली करबा मोर डाउनलोड होउची ए पर्यंत होला मोर नेट आज स्लो अछि डाउनलोड होउची जो सॉर्टिंग रो प्रोग्राम उडा Okay, ना sir. काली करबा ठीक अछि Okay, sir. मु एकाळे डाउनलोड पे बसे देबे तो सेति पे स्लो हे गला आउ सब 10 जीबी ऊपर सब सो C++ में जो लिंक लिस्ट विषय जानले एठी तार ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ए चैप्टर मानकर अछि In this session, we'll be learn to identify the features of linked list, implement a single linked list, right? Individual linked list ऊपर जानिबा, single linked list प्रथमे जानिबा, तापरे double linked list ऊपर जानिबा, तार algorithm, तार program, then circular linked list, तार algorithm, तार program, with examples. Suppose you have to write an algorithm to generate and store all prime number between 1 to 1 lakh and display them, right? How will you solve this problem? धर सपोज एटा तमरो प्रॉब्लम अछि तुमको डिस्प्ले करिवार अछि प्राइम नंबर 1 टू 1 लाख भितर तमरो प्राइम नंबर डिस्प्ले करिवार अछि देन ताकू को वे रे तमे करिवो consider the following algorithm एटा खाली एग्जांपल राइट consider the following algorithm which use an array to solve this problem right तमे जो प्रॉब्लम ता तमरो अछि एबे 1 रु 1 लाख भितर तुमको प्राइम नंबर डिस्प्ले करिवार अछि सेटा तमे array थ्रू रु डिस्प्ले करिया पई तमे array थ्रू रु सेटा सॉल्यूशन करिया पई तमे चाहिला तो set I equal to 0 repeat step 3 varying n from 2 to 1 lakh then if n is a prime number set ai array right equal to n if n is prime store it in an array I equal to I plus 1 increment color then repeat step 5 varying j from 0 to I minus 1 display aj display prime number store in the to the array এই program रे तमरो problem कोन होची देखो what is this what is the problem in this algorithm the number of prime number between 1 to 1 lakh is not known right since you are using an array to store the prime number you need to declare an array of arbitrarily large size to store the prime number right तो जेताले तमरो प्राइम नंबर जेताले तम स्टोर करूछ तमरो माने डिस्प्ले करिया पे आरे रे जेताले तमे डिस्प्ले करिया पे चाहूछ तो आरे रे कोन आरे रे प्रथम रु जेताले तमे माने प्रोग्राम जेताले लेखुछ सेताले तमरो आरे रे साइज डिक्लेयर करिया पे पड़े राइट एबे 1 रु 1 लाख भीतर जेताले साइज तमे साइज ताको डिक्लेयर करिवो जदि कोनोसी प्राइम नंबर अछि तो मोर सेटा स्टोर हे गेला आरे भीतर स्टोर हे गेला जे 1 रु 1 लाख सब तक जे प्राइम नंबर सेटा तो माने नै ना ता भितरु किछटा प्राइम नंबर आसी तो बाकी जो स्पेस उडा जो बंचिला राइट तमे धरो गोटे आरे रो साइज जदि डिक्लेयर करलो 1 लाख ता भितरु तो धरो सपोज 100 टा प्राइम नंबर बाहरला तो 100 जे मोर स्टोर हे गेला बाकी बाकी जो स्पेस उडा बंचिला सेटा तो वेस्ट गला राइट तो एभले केस रे आरे तमे यूज कर परिबो नाही राइट disadvantage of this approach suppose you declare an array of size n if the number of prime number between 1 to 1 lakh is more than n then all the prime number cannot be stored right if the number of prime number is much less than n a lot of memory space is wasted. Thus, you cannot use an array to store a set of elements if you do not know the total number of elements in advance. Array रे जदि तमे प्रोग्राम जदि सॉल्व करिया पय चाहूछो तो तमको प्रथमे तमको साइज प्रथमे एडवांसली डिक्लेयर करिया को पड़िबो जे मोर आंसर ता मोर सॉल्यूशन ता एई साइज भीतर हबा दरकार धर तमको साइज ही जणा नै केते जे डाटा आसीबो केते जे डाटा मोर स्टोर हबो मेमोरी रे सेटा तमु जणा नै तो सेइथरे आरे जदि तमे अप्लाई करिवो तमरो मेमोरी वेस्ट हबो एंड डाटा स्कार्स हबो बोली तमरो माने पॉसिबिलिटी थाय how do you solve this problem by having some way in which you can allocate memory as and when it is required right जदि मते एमिति किछि सॉल्यूशन जदि आसे जे रन टाइम रे जदि मोर कोनोसी वैल्यू जदि प्राइम नंबर आसला रन टाइम रे जदि मोर वैल्यू टा मोर माने स्टोर करिया पे हुए
रन टाइम रे ही से वैल्यू पाई मेमोरी आलोकेटेड हो तो जेतेटा मोर प्राइम नंबर आसीबो सेतेटा रन टाइम रे वैल्यू मेमोरी मोर ऑक्युपाई करिया पय स्पेस सेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो ताकि मते एडवांसली मते आउ स्पेस मते दरकार नै जे एतिकी स्पेस मते रिक्वायर्ड होउची कई जेतिकीटा डाटा आसीबो रन टाइम रे सेतिकीटा स्पेस मोर ऑटोमेटिकली जनरेट हो राइट when you declare an array a continuous हाँ को एथिरे को मेथड यूज होला मतलब प्राइम नंबर एते सारा बाहर करिवारे को मेथड यूज होबो लिंक लिस्ट एथिरे लिंक लिस्ट यूज होबो कारण देखो जदी गोटे बड़ प्रोग्राम जदी आसिला सेथिरे कंटीन्यूअस मेमोरी जदी एलोकेशन जदी कथा उठिला जदी तुमको नंबर ऑफ साइज जदी प्रथम रु जणा अछि ताले आरे रे करो आरे इजी लागि जदि नंबर ऑफ साइज तुमको जना नाही जे मते एतिकीटा आउटपुट आसीबो या फिर एतिकीटा डाटा इनपुट दिया हबो तुमको नंबर ऑफ साइज तुमको नंबर ऑफ ऑक्युपेशन तुमको जना नाही तो सेबळे कैसे लिंक लिस्ट यूज कर सेति पई लिंक लिस्ट रो कांसेप्ट आसिला जोटा कि आरे रे डिसएडवांटेज मोर अछि एबे देखो एबे धरो नॉर्मली भाबो जे मु धरो 50 गोटे आरे डिक्लेयर करछि 50 साइज डिक्लेयर करछि एबे 50 साइज रे डिक्लेयर करछि 50 टा कोन डाटा मोर स्टोर होउछि हुए तो ताठू कम डाटा मु देई पारे राइट जदि कम डाटा दउछि बाकी रेस्ट स्पेस मोर वेस्ट हे गेला जदि मोर अधिका डाटा आसला एमिति किछि माने नै जे मोर 50 टा डाटा आसीबो जदि मोर अधिका डाटा आसला ताले मो तो आरे रे स्टोर हे परिबन तो सेटा मोर वेल डिफाइंड सॉल्यूशन मोर नुह से भले केस रे मोर लिंक लिस्ट कांसेप्ट आसे राइट ता ऊपर मु आसुछि देखो when you declare an array a continuous block of memory is allocated let us suppose you declare an array of size 10 to store first 10 prime number एटा मोर तो array मोर इंडेक्स नंबर कोन 0 रु स्टार्ट हबो तो 10 साइज रे डिक्लेयर करछि 0 टू 9 जाय मोर से स्पेस ऑक्युपाई करू माने इंडेक्स नंबर ता मोर 0 टू 9 जाय जेति कि साइज ता डिक्लेयर करबो 1 लेस देन मोर स्पेस ता को से ऑक्युपाई करू एबे एटा जो 1000 1002 1004 एटा होची मेमोरी एलोकेशन माने जो मेमोरी रे जो स्पेस ता जो ऑक्युपाई करछि तार एड्रेस ता राइट तार एड्रेस ता तमरो एमिति सपोज one continuous block of memory allocate for the array to store 10 element if you know the address of the first element in the array you can calculate the address of any other element as soon address of the element plus size of the element into index of element right तमु जदि array रो first index number जदि मिली गला ताले तमे अलगा कोन से इंडेक्स नंबर पाखु को तमे जाई परिबो राइट जीरो इंडेक्स नंबर जदि तमु मिली गला एड्रेस ता मिली गला ताले तमे अलगा कोन से इंडेक्स नंबर को जाई परिबो केमिति जाई परिबो तार फार्मूला होची एटा address of the first element plus size of the element into index of the element when memory is allocated dynamically means kono runtime a block of memory is assigned arbitrarily from any location in the memory right a previous case re मोर number of size मते जणा अछि एठी number of size मते जणा अछि 10 मोर size मते जणा अछि it means कोन 9 valid value मते स्टोर करिवार अछि एभले केस तमे array यूज करो इजी लागिबो जदि तमरो नंबर ऑफ जो allocated जो मेमोरी allocated जोटा होउची सेटा डायनामिकली जदि हबो रन टाइम रे जदि हबो सेही केस रे जदि तमे array डिक्लेयर करिवो एते इजीली सेटा सॉल्यूशन बाहरिबो नाही एरर थ्रू करिवो राइट से भले केस रे तुमको एमिति गोटे जिंस द एमिति गोटे कांसेप्ट दरकार जे कि मु वैल्यू जो पास करिवि से रन टाइम रे ही मेमोरी एलोकेटेड कर दबो एंड जो मेमोरी एलोकेशन करिवो सी नेक्स्ट मेमोरी रो एड्रेस ता को रखबो ताकि चेन सिस्टम हो ताकि मु गोटे लोकेशन रु आ गोटे लोकेशन को इजीली ट्रैवल करि पारि राइट therefore unlike array this block may not be continuous and may be spared randomly in the memory let us see how this happen by allocating memory dynamically for the prime numbers allocate memory for 2 मोर allocated हला तार एड्रेस ता रहला मोर कोन 1002 माने से मेमोरी जो ऑक्युपाई हला सेटा मोर एड्रेस ता रहला 1002 then allocate memory for 3
तार आड्रेस रहा मोर 1036 या माने नुह जे 1002 जदि मेमोरी आलोकेशन है तो नेक्स्ट मेमोरी आलोकेशन 1003 हम यहाँ कौन बुक रे लिखा है राइट मेमोरी गोटे मोर गोटे खुला पड़िया राइट जमी तुम ग्राउंड तुम कॉलेज ग्राउंड हो कि तुम ग्राउंड देखो जिते से ग्राउंड या फिर पार्क नहीं जाओ राइट पार्क गोटे बड़ एरिया राइट तो सेठी जी पाइले जो खाली जगह अच्छी से बसिला खेलिला बुलिला जो भी जहाँ कला है भाव से पूरा पार्क टा हूँ मेमोरी एंड तमें हूँ गोटे गोटे भैल्यू तमें जो खाली जगह पाइल से तार से जगह को यूज कल सेमती मेमोरी भी राइट तमें जो भैल्यू पास कर यहीटा नुह जे भैल्यू मोर कंटिन्यूअस मेमोरी आलोकेशन कर ना मेमोरी मोर रैंडमली जो पाइले से मोर मेमोरी आलोकेटेड कर टू प्रथम जो मेमोरी आलोकेटेड कला टू जो स्टोर है मेमोरी भितर से मोर 1002 लोकेशन मोर स्टोर है एड्रेस स्टोर है देन 3 जो इनसर्ट कला सी तार जो स्पेस मिलला से स्टोर है से जो स्पेस रो जो स्टोर है तार एड्रेस रहा 1036 एबे allocate memory for 5 store है 1008 then allocate memory for 7 store है 1020 then मोर allocate memory for 11 then सेटा store है 1030 now if you know the address of the first element you cannot calculate the address of the rest of the element एटा array रा disadvantage array रे प्रथमे मु साइज डिक्लेयर करूची बोली मत जना पड़ जाए फास्ट इंडेक्स नंबर टा कौन प्रथम डिक्लेयर करूची बोली जदि रैंडमली डायनामिकली जदि मत मेमोरी एलोकेशन करने को पड़े आरे मोर माने वेल डिफाइंड सॉल्यूशन नुह जोटा कि एई केस रे एटा मु रैंडमली मेमोरी एलोकेट कली एबे मते मु जदि फर्स्ट एलिमेंट रो एड्रेस टा जदि मते जणा अछि ताले नेक्स्ट एलिमेंट को मु जाई परिबी कि नेक्स्ट एलिमेंट के 3 एलिमेंट जोटी स्टोर है सेठी कि मु जाई परिबी कि आरे मोर सेटा हबनी right this is because all the element are spared at a random location in the memory right to access any element you need to know its address therefore it would be good if every allocated block of memory contains the address of the next block in sequence best solution होची कोन जदि गोटे नोड मोर डिफाइंड है मोर माने गोटे मेमोरी आलोकेशन जदि कला से मेमोरी आलोकेशन नेक्स्ट मेमोरी आलोकेशन रो जदि एड्रेस टा जदि रखिला निज पाखरे ताले मोर चेन सिस्टम से रैंडमली जोठी भी स्टोर हो किछि कथा नै धर मोर एठी 2 मोर एठी स्टोर हैला मोर 3 आ गोटे जगह स्टोर है बट 3 रो 3 जोठी स्टोर है ता एड्रेस टा मो पाखरे एठी अछि एबे मु तमु कहबी जे तम पाखरे लक्ष्मी रो एड्रेस टा मते दियो राइट तो एबे लक्ष्मी आउ कोठी से तार घरटा आउ कोठी थाए राइट बट तुम पाखे एड्रेस अच्छे माने तमे इजिली ता पाखे पहुंच पारे से जोठी भी थाओ डिटो सेम जिंस राइट एठी कोन करबा एबे 2 मोर कहार एड्रेस रखिछि 1036 के 3 तो रैंडमली मु जोठी भी मेमोरी एलोकेटेड करे बट जहाँ जो मोर मेमोरी एलोकेशन अच्छी तार एड्रेस जो मो पाखे अच्छी मुझे इजिली पाखे पहुंच पारि राइट दिस गिव्स द लिस्ट ए लिंक्ड स्ट्रक्चर वेयर ईच ब्लॉक इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक इन सीक्वेंस हला तो एटा होची चेन सिस्टम एटा को जे चेन सिस्टम राइट आरे रे मोर प्रथम साइज डिक्लेयर होची बोली मु कंसेक्यूटिव मैनर रे मेमोरी एलोकेशन हे जाउची बट मोर जो रैंडमली डायनामिकली जो मु मेमोरी एलोकेशन करी से आरे मोर बेस्ट सॉल्यूशन नुह से मु कौन करी लिंक लिस्ट यूज कर जोटा कि यही कॉन्सेप्ट को कह लिंक लिस्ट जे कि गोटे नोड गोटे मेमोरी आउ गोटे मेमोरी रो एड्रेस टा निज पाखरे रखुची ताले मु इजीली गोटे मेमोरी रो आउ गोटे मेमोरी को मु इजीली ट्रैवल कर पारी क्लियर यस सर You can declare a variable start that store the address of the first block. You can now begin at start and move through the list by following the links. An example of data structure that implement this concept is a linked list, right? A concept of a linked list. Linked list is a dynamic data structure
allows memory to be allocated as and when it is required. ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା ତମକୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଲିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ ମେମୋରି ରେ ସେ ସ୍ପେସ ଟା ସେ ଅକୁପାଇ ସେ କରିପାରେ. Consist of a chain of element in which each element is referred to as a node. Right? जो मेमोरी allocation जो करिवो से मेमोरी allocation को कुआजे node. A node is the basic building block of linked list. এটা হচ্ছে node. A node consists of two parts. Data refers to the information held by the node. जो थे मु information pass कर data part टा जो थे मु information माने value store कर पारी. Right? एटा होची मोर data part जो थे मु value टा को store करी. And second part टा होची second मोर node टा होची link holds the address of the next node in the list. Right? एई part टा होची मोर link जोटा कि मोर नेक्स्ट नोड रो एड्रेस टा को मु स्टोर करि रखि पारि. एटा होची मोर लिंक लिस्ट रो नोड. नोड रे मोर दीटा पार्ट थाए. गोटो होची डाटा पार्ट, गोटो होची लिंक पार्ट. डाटा पार्ट रे मु वैल्यू टा को स्टोर करि परबी. लिंक पार्ट रे मु नेक्स्ट नोड रो एड्रेस टा को निजे पाखरे रखुची. एड्रेस टा को हां एटा जेमते all the node in a link list are present at arbitrary memory location. सबु नोड रो गोटे एड्रेस अछि. जेंते एई नोड रो एड्रेस टा होची 2403, एई नोड रो एड्रेस टा होची 3352, एई नोड रो एड्रेस टा होची 5689 एंड एई नोड रो एड्रेस टा होची 1012. तो मु कोन करबी चेन सिस्टम अछि. गोटे नोड रो आ गोटे नोड को ट्रैवर्स करी. तो मु कोन करली देयरफॉर एवरी नोड इन ए लिंक लिस्ट has link field that store the address of the next node in a sequence. एटा तो आउ गोटे नोड रो जते मु एड्रेस रखि दोची गोटे चेन गोटे लिंक गोटे क्रिएट हे जाउची गोटे नोड रो आ गोटे नोड. सेति पई एई नोड रो एड्रेस टा मु आ पाखे रहली तो एई गोटे लिंक गोटे जनरेट हे गला. सेमिति एई नोड रो एड्रेस टा मु आ पाखे रहली तो एई गोटे चेन गोटे सिस्टम हे गला. तो गोटे नोड रो आ गोटे नोड को मु इजीली ट्रैवर्स कर परिबी. एंड लास्ट नोड रे मोर नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछि नोड नै बोले एठी मोर नल वैल्यू असाइन हो. क्लियर? यस सर बट इट कंटीन्यूअसली रहबनी के वैल्यू मतलब रैंडमली अछि तो कंटीन्यूअस मतलब जो फर्स्ट रो रैंडमली अछि ना तो एटा पा होछि तमरो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. एटा कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. सपोज तमे धरो तमको कुआ गला जे रैंडमली तमे 10 टा नंबर दियो. रैंडमली 10 टा नंबर जदि दबो इट मींस कोन तम कंटीन्यूअस मेमोरी नंबर दबो कि 1 to 10 जे नंबर दबो तम रैंडमली दबो. धर मु थरे देली 10 देली तापरे मु देली सपोज 20 देली तापरे देली 30 देली तापरे पुनी मु 9 देली. तो एटा होची डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रे जो नोट ता तमे जो वैल्यू ता तमे पास करो से रैंडमली कोनसी भी जगह रे मेमोरी एलोकेशन से करि पारे. राइट? तो सेति पई से कोन कला लिंक लिस्ट कोन कला जोठी मेमोरी एलोकेशन करिवो तार नेक्स्ट नोड रो जदि एड्रेस ता पाखरे अछि से इजीली गोटे लिंक क्रिएट कर दो. ताले तमे गोटे नोड रो आ गोटे नोड को इजीली ट्रैवल्स कर पारे. क्लियर? यस सर. एमिति कोनोसे आरे को छाडी की आरे रे मोर इजी केतले होउची जेते बेले मु गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन ता आगुरु मते जणा अछि कोन सॉल्यूशन हेई पारे या फिर को प्रकार वैल्यू टा मोर स्टोर होबो सेटा मते आगुरु जणा अछि. सेति पई मु आगुरु साइज टा डिक्लेयर करछि. तुमको सेति पई आरे रे कोन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन से करूछि. जो थरे मते जणा नाही जोटा मते जणा नाही सेही केस रे मु केमिति करी. राइट? एबे एमती हेई पारे तमे प्रॉब्लम फेस करछ कि न फेस करछ मु कहि पाउनी. धर तमे बैंक रे क्यू रे छिडाइछ हला मु कोनी टोकन करिवा तमे क्यू रे छिडाइछ. धर तुमको तमर किछि काम पर तमे गोटे पर छिडाइछ काउंटर पाखरे तीन जनक पछरे तमे छिडाइछ. एबे तमर किछि काम पड़ला तमे कोन करछ जे पछ वाला को कहि जाउछ जे मु एई गोटे मिनिट मु आछी कहि जाउछ ना लाइन जते बाहरुछ. इट मींस कोन तम एड्रेस ता ताकू देलो डायनामिकली तमे से गोटे मिनिट पर जते आसीबो सेम जगह रे रिप्लेस हे हला. या नो जे तमे लाइन छाड़ देलो तो तमे ताकू कहिलो भी सी तुमको कहबो नै पछरे आसबो. एमती केबे हेछि हेइ तमे कहि की जाओ लाइन रे मु गोटे मिनिट रे आछी एमती तमे रियल लाइफ रे फेस
दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सेटा तमरो आरे रे हुएनी आरे रे कोन फिक्स साइज अछि राइट तमे मजरू थरे बाहरी गलो भी आउ माने मिडिल पोजीशन रे आउ तमे पहुंच माने पसी परिबो तुम फोन रे बिगिनिंग रे कि एंड रे तुमको आसे पड़ो बट लिंक लिस्ट रे मिडिल लु बाहरी परिबो एंड मिडिल ले पसी भी परिबो बुझला सेति पय लिंक लिस्ट रो कांसेप्ट आसला yes sir the last node in a linked list does not contain point to any other node therefore it points to null जोटा कि last node ता मोर आउ node सहित मोर link नाही सत एटा मोर next part ता मोर null value से assign कला to keep track of the first node declare a variable or pointer start which always point to the first node right start variable गोटे start बोली गोटे variable अछि से always first node को pointing करे कोन पे जे एटा मोर फर्स्ट नोड बोली से इंडिकेट करे when the list is empty start contains null list जदि empty थिबो start equal to null value assign हुए right list तो किछ नै start equal to null मोर let us solve the given problem of storing prime number using a linked list repeat step 2 varying n from 2 to 1 lakh if n is a prime number if n is a prime number माने ता पे लॉजिक लिखिया को पड़िबो राइट प्राइम नंबर रो लॉजिक ता सेठी if n is a खाली सी स्टेटमेंट दे if n is a prime number insert the linked list allocate the memory of a new node store the prime number of the new node गोटे न्यू नोड कोई गोटे डिक्लेयर करिवो ता भितरे मोर प्राइम नंबर टा को स्टोर करिवो अटैच द न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट राइट डिस्प्ले द प्राइम नंबर स्टोर इन द लिंक लिस्ट एटा खाली स्टेटमेंट देला प्राइम नंबर पे ता पे लॉजिक लिखिबो सी जदी चेक करिवो जो नंबर ता तमे इनपुट दबो सेटा प्राइम नंबर की प्राइम नंबर जदी हेला ताले गोटे मेमोरी रे गोटे स्पेस ऑक्युपाई करिवो से स्पेस रे से वैल्यू टा को स्टोर करिवो देन नेक्स्ट नोड को सेटा को अटैच कर क्लियर yes sir consider the following linked list that store prime number एटा मोर लिस्ट अछि when a new prime number is generated एटा ऑलरेडी गोटे लिस्ट अछि राइट से तापर कहूची से जो लॉजिक ता जो लेखा हेतला प्रीवियस स्लाइड तारो एनिमेशन ता से कहूची when a new prime number is generated it should be inserted at the end of the list initially when the list is empty start contains null start equal to null consider the given algorithm insert a node in a linked list right eta taro moro algorithm ta consider that the list is initially empty start equal to null प्रथमे चेक करिवो जे मोरो जो नोड ता तमे इंसर्ट करिवो से नोड ता रे किछि आउ किछि लिस्ट अछि की माने लिस्ट ऑलरेडी एग्जिट अछि की जदि नाही तो स्टार्ट इक्वल टू null insert a prime number 2 allocate memory for the new node allocated hela assign value to the data field of the new node assign hela if start is null then start equal to if start is null means kon start equal to null तो start equal to null मोर initially अछि तो make start point to the new node go to step 6 से कोन अछि make the next field of the new node point to null एते की बुझिलो एसिदा सर माने फर्स्ट ये रे ही स्टार्ट होचे देन तापर येटा नॉलेज जाउचे ना 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 जत्ते बेले भी जदि लिंक लिस्ट किछि प्रोग्राम आसिला प्रथमे चेक करिवो से लिस्ट रे ऑलरेडी वैल्यू अछि ना नाही राइट ऑलरेडी वैल्यू अछि ना नाही तो सेति पई से कहला जे प्रथमे चेक कला जे से लिस्ट रे ऑलरेडी वैल्यू अछि की जदि वैल्यू अछि ताले मते खोजे को पड़िबो कि से न्यू नोड ता कोठी इंसर्ट हबो बिगिनिंग रे ना मिडिल रे ना एंड रे तो एटा कोन कला से इनिशियल स्टेज रे से कोन कला कंसीडर द लिस्ट इज इनिशियली एम्प्टी मोर एक्जिस्टिंग लिस्ट किछि नाही राइट तो से कोन कला स्टार्ट इक्वल टू नल देला एटी की बुझिलो मोर एक्जिस्टिंग लिस्ट किछि नाही तो मोर जो नुआ नोटा इंसर्ट हबो सेठू ही लिस्ट स्टार्ट हबो
मोर ऑलरेडी लिस्ट किछि नाही राइट बुझला एते कि स्टार्ट इक्वल टू नल काई गेला Yes, sir. देन इंसर्ट ए प्राइम नंबर 2 मोर गोटे प्राइम नंबर आसला 2 ताकू मु लिस्ट रे मु इंसर्ट करी तो इनिशियली तो लिस्ट किछि नाही तो एटा ही मोर फास्ट नोड राइट तो सी कोन कला अलोकेट मेमोरी फॉर द न्यू नोड अलोकेटेड कला सेथिरे मोर वैल्यू असाइन कला से नोड रे वैल्यू असाइन कला देन सी चेक कला प्रथमे इफ स्टार्ट इज नल स्टार्ट इक्वल टू नल अछि की जदि स्टार्ट इक्वल टू जदि नल अछि ताले मेक स्टार्ट पॉइंट टू द न्यू नोड कारण एटा होची मोर न्यू नोड तो स्टार्ट पॉइंट हे गेला मोर न्यू नोड बुझला एबे मोर आउ किछि एठी लिस्ट अछि की आउ किछि एक्जिस्टिंग लिस्ट अछि की नाही तो सी कोन कला गो टू स्टेप 6 तो स्टेप 6 को जेतरा आसला मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड पॉइंट टू नल कारण आउ मोर लिस्ट किछि नाही एठी एक्जिस्टिंग आउ किछि नै फिलहाल आउ किछि नाही तो आर नेक्स्ट पार्ट रे मोर नल वैल्यू को से असाइन करता बुझला एते की क्लियर हला Yes, sir. देन आउ गोटे वैल्यू आमे इंसर्ट करबा देखिबा कोन होची इंसर्शन कंप्लीट सिंगल नोट टा मोर थला इंसर्ट ए प्राइम नंबर 3 आउ गोटे मोर आसला एठी allocate the memory of the new node allocated कला assign the value of the data field of the new node assign कला new node रे value मोर एबे मोर स्टार्ट टा नल की ना मोर एबे स्टार्ट इज नल की ना मोर स्टार्ट गोटे नोड रे मोर असाइन हेची तो 3 स्टेप टा आउ से एग्जीक्यूट करिवो नाही तो जंप करिवो कोठी 4 स्टेप को बुझला एटा Yes, sir. 4 स्टेप रे कोन कला लोकेट द लास्ट नोड इन द लिस्ट एंड मार्क इट एज करेंट नोड to locate last node in the list execute the following step mark the first node as current node बुझला then repeat step C until the successor of current node becomes null right repeat step C टा कोडा एटा successor of current node माने एई पार्ट को कोआ जे successor राइट गोटे नोड रो जेताले सक्सेसर कथा उठला सेताले जानिबो तार लिंक पार्ट को कुहा जाय सक्सेसर बुझला इसीदा Yes, sir. तो सी कोन कला स्टेप सी टाकू से एग्जीक्यूट करिवो टिल जेते जाय करंट नोड बिकम्स नल सक्सेसर ऑफ करंट नोड्स बिकम नल तो मेक करंट नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस माने ए जो नल वैल्यू टा जो अछि करंट नोड रो सक्सेसर ता जो अछि सेटा लिंक ही जो को कहा को न्यू नोड को तो ए नल वैल्यू टा हटे की मोर आसी जीवो कोठी मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द करंट नोड पॉइंट टू द न्यू नोड बुझला लिंक हे गेला एबे Yes, बुझला sir. एबे Yeah. स्टेप 6 हां एबे स्टेप 6 मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड पॉइंट टू नल तो न्यू नोड टा कोटा मोर एटा आरो नेक्स्ट फील्ड टा कोटा एटा तो नल वैल्यू असाइन कर दला बुझला एटा Aଜ୍ଞା sir. देन सेथिपे मु कुहे जेतले लिंक लिस्ट कथा उठिबो सदाळे ड्रॉ करिवो रे ड्रॉ करिवो तुमको 90% लॉजिक बुझा पड़ जिवो जे कोनटा एक्चुअली होउची राइट देखो आ गोटे देखो इंसर्ट ए प्राइम नंबर 5 गोटे आ गोटे वैल्यू हम इंसर्ट करिया 5 तो ता पई मेमोरी एलोकेशन करिवो असाइन द डाटा फील्ड ऑफ द न्यू नोड रे डाटा मोर असाइन कला तो इफ स्टार्ट इज नल स्टार्ट एबे नल नाही तो जंप कर दला कोठी मोर फोर्थ स्टेप को लोकेट द लास्ट नोड इन द लिस्ट and mark it as current node to locate the last node in the list execute the following step right make the first node as first node mar current node dela repeat step C until the successor of current node becomes null तो make the current node point to the next node in sequence तो एटा कोन कला एटा कहला जे जेते जाय मोर current node रो successor ता null न हिची सेते जाय से execute करू काहा को एटा C ता right make the current node point to the next node in sequence तो एठी मोर null अछि की successor null अछि नाही तो next node को आसी गेला right current node मोर next node को आसी गेला then एठी पुनी चेक कला जे आर successor मोर null अछि right आर successor मोर null अछि then step 5 को आसला make the next field of the current node point to the new node link हे गेला
Then step 6, make the next field of the new node point to null. बुझिला इसीदा yes sir. कंप्लीट एल्गोरिथम टा बुझिलो स्टेप बाय एल्गोरिथम इजी yes sir. हैला एल्गोरिथम इजी बट जेतेबेले तमे डायग्राम टा को ड्रा कर दबो एल्गोरिथम बहुत इजी लागे तुमको लॉजिक भी बुझा पड़ जिवो बुझिला yes sir. What is the problem with this algorithm? Consider a list 10,000 numbers. To insert a number at the end of the list, you first need to locate the last node in the list, right? जदि मते गोटे नोड लास्ट रे मते इंसर्ट करिवार अछि तो ता पय मते लास्ट नोड कोइ गोटे डिक्लेयर करिवार अछि जेमति मोर स्टार्ट मु गोटे डिक्लेयर कली कई to reach the last node you have to start from the first node and visit all the preceding node before you reach the last node. This approach is very time consuming for lengthy list. ए जो केस टा कले ए केस रे कोन होची मु कोनटा कहूची ए जो रिपीट स्टेप करंट नोड टा कोन स्टार्टिंग रू मु असाइन करूची स्टार्टिंग रू पुनी चेक करी करी जाउची करंट नोड रो सक्सेसर टा कोठी नल अछि देन ताकू मु नेक्स्ट नोड को मु लिंक करूची तो एमि जो लंबा नोड टा आसीबो तो गोटे चेक करी जो टाइम कंज्यूमिंग लागिबो. Therefore, a better approach is to declare a variable last which will store the address of the last node in the list. Hence, you need to maintain two variables, start and last, to keep track of the first and last node in the respectively. If the list is empty, start and last point to the null. जेमते start तमे declare करते सेमते last तमे declare करिवो null बोली. So refer to the given algorithm to insert a node at the end of the list. एटा केवल एथि पई स्टार्टिंग आउ बिगिनिंग पई प्रीवियस एल्गोरिथम टा बेस्ट राइट जदि मते एंड रे जदि नोड टाकू इंसर्ट करिया पे पड़ला ता पे मते लास्ट नोड करी गोटे माने मते डिक्लेयर करिवार अछि ना जदि मु डिक्लेयर न करी तो फास्ट रू मते चेक करी आसिया पड़िबो जे जो नोड टा मोर नेक्स्ट पार्ट टा नल अछि ताले सेटा होछ मोर लास्ट एबे बड़ लिस्ट जदि थिबो गोटे चेक करी आसिया पड़िबो बुझला टाइम कंज्यूमिंग लागि तो लास्ट वेरिएबल गोटे कैरी करा. Consider that the list is initially empty, start equal to null, last equal to null. Insert a prime number 2, allocate the memory, got a prime number insert kariba 2. Then allocate the memory of the new node, assign the data field of the new node. Then if start is null, then make the start point to the new node, make last point to the new node, right? Go to step 6 means the new node रो next part टाकू null मु assign कर right same जिंसो खाली last कोई गोटे variable मु declare कर. Insertion complete. Insert a prime number 3, allocate the memory of the new node, assign the data field of the new node. If start is null, एबे start मोर null नहीं, then jump करियो कोठी step 4 को make the next field of the last point to the new node माने next field of the last एटा link हे जिवो मोर new node को तो लिंक हे गला राइट मेक द न्यू नोड पॉइंट टू द मेक द न्यू नोड एज लास्ट मोर न्यू नोड को आसानी बुझला एते की एसेदा सर आउथोरिटी को जानतो एबे मोर ए जो लिस्ट रे आ प्रीवियस एल्गोरिथम रे कोन होतला जे जदि मु बिगिनिंग रे किंबा मोर मिडिल जदि मु इंसर्ट करी तो प्रीवियस एल्गोरिथम टा ठीक थिला जदि मते लास्ट रे जदि इंसर्ट करिवार अछि तो मते कोन होतला प्रॉब्लम होबो कोन जदि मोर लंबा लिस्ट जदि थिबो ताले गोटे मते नोड चेक करी जिबा पड़ियो जे लास्ट नोड टा कोउटा बोल तो सेति पई मते ता एते लंबा प्रोसीजर फॉलो करिबा को बदल रे से ताको छोटो कर देला कोन जेमि तमे स्टार्ट बोली गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करिथिलो सेमिति लास्ट बोली गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कर स्टार्ट टा कहा को इंडिकेट करूची फर्स्ट नोड को इंडिकेट करूची तो लास्ट कहा को इंडिकेट करिवो लास्ट नोड को इंडिकेट करिवो तो मते आउ फर्स्ट टू लास्ट रे मते आउ चेक करिवा दरकार कोठी मोर लास्ट नोड टा आसला बोली तो सेथि पई मोर एठी से डिक्लेयर कला तो
तो स्टार्ट इक्वल टू माने इनिशियल रे मोर किछि मोर लिस्ट नै एम्प्टी लिस्ट अछि तो स्टार्ट इक्वल टू नल लास्ट इक्वल टू आल्सो नल मोर देला इंसर्ट ए प्राइम नंबर 2 गोटे मोर प्राइम नंबर इंसर्ट करबी सेटा होछि 2 तो आलोकेट कला मेमोरी असाइन कला वैल्यू से नोड भितरे देन इफ स्टार्ट इज नल इनिशियली स्टार्ट इक्वल टू नल मोर अछि तो स्टार्ट पॉइंट टू द न्यू नोड then make last point to the also new node, right? Go to step 6 next field of the new node point to the null एतिकी बुझिलो इसला एतिकी बुझिलो yes sir then आउ गोटे मु इंसर्ट करूची आउ गोटे वैल्यू इंसर्ट करूची इंसर्ट प्राइम नंबर 3 allocate करिवो प्रथमे assign करिवो वैल्यू देन एबे थर्ड स्टेप टा मोर आउ चेक करिवो की कारण स्टार्ट ऑलरेडी मोर असाइन हे जाइछे गोटे वेरिएबल रे गोटे नोड रे असाइन हे जाइछे तो थर्ड स्टेप टा मत आउ चेक करिबा दरकार नै जंप करिवो कोठी फोर्थ स्टेप को मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट पॉइंट टू द न्यू नोड नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट कोटा एटा आरो नेक्स्ट फील्ड कोटा एटा मोर पॉइंट करिवो काहा को न्यू नोड को तो लिंक गोटे जनरेट हे गला बुझलो एते की yes sir then make new node as last हमर कहा को आसीबो न्यू नोड को तो लास्ट हमर पळे आसला न्यू नोड बुझला एते की yes sir then make the next field of the new node point to the null new node रो next field हमर null हला बुझला एबे आ गोटे जदि मु इंसर्ट करबी yes sir insert prime number 5 allocate करिवो assign कला then third step टा एक्जीक्यूट होबनी फोर्थ स्टेप टा एक्जीक्यूट हो मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट पॉइंट टू द न्यू नोड मतलब करंट नोड कहि कि जो प्रीवियस एल्गोरिथम रे मते गोटे नोड चेक करी जिबा पड़थला सेटा मते सही स्टेप आउ मते करियार नै मु डायरेक्टली मु जाई परबी जोठ मोर लास्ट नोड अछि सेटा मोर लास्ट एंड नोड टा बई ट्रीट कर परबी तो मेक द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट पॉइंट टू द न्यू नोड मेक न्यू नोड एज लास्ट make the next field of the new node point to the null बुझला तो जो जो मिडिल जो रिपीट जो करथला करंट नोड टा को रिपीट करथला जो चेक जो कंडीशन दबा थला लास्ट वेरिएबल डिक्लेयर करले मत से कंडीशन दबा दरकार बुझला yes sir कंप्लीट बुझलो एटा ए जिंसटा बुझलो I guess sir ओके तो एठू हमें काली स्टार्ट करबा ठीक अछि काली हमें प्रोग्राम करबा तो एठू हमें स्टार्ट करबा बुझला yes sir ओके ए पर्यंत लिंक लिस्ट पूरा बुझलो माने जति की तुमको पढैली सेति बुझलो पूरा I guess sir ओके ओके ठीक अछि टाइम ऑफ हो गेलानी thank you sir थैंक यू yes sir thank you sir